meditation. Hello and good afternoon, everyone. Let's start the session with a short meditation. Sit back comfortably. Close your eyes. Take slow, deep breaths in through your nose, out through your mouth. With each exhale, let your body soften and release tension. Bring your attention to the feeling of fear. Notice where it sits in your body. Maybe your chest, stomach, or throat. Instead of pushing it away, silently say, I see you, fear. You are part of me, but you are not all of me. Visualize a soft, glowing light in your heart. With each breath, it grows brighter. Silently repeat, I am safe. I am strong enough to face this moment. I choose courage over fear. Imagine this light expanding throughout your body, filling you with the steadiness. Let it spread beyond you, surrounding you like a protective shield of peace. Take a final deep breath. Place a hand on your heart and say silently, fear does not control me. I carry calm and courage with me. Slowly return to the present, opening your eyes whenever you are ready. So let's start with the reading session. Anika sister, can you please share the screen? Hi, is the screen visible to everyone? Yes, sister, it is visible. Okay, Thank you. thank you. Let's start the reading session. Fear of water, mountains, closed places, etc. There are many people who are afraid to go into an elevator, climb mountains, or even swim in the water. It may well be that the individual had unpleasant experiences in the water in his youth, such as having been thrown forcibly into the water without being able to swim. He might have been forcibly detained in an elevator, which failed to function properly, causing resultant fear of closed places. तो यहाँ पे ऑथर बहुत सारी फियर को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें कोई कोई को वाटर से फियर होता है, माउंटेन से होता है, क्लोज्ड प्लेसेस से होता है. तो ऑथर ये बता रहे हैं कि फियर अराइज होता कैसे है. मे बी कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, हम फोर्सिबली कभी वाटर में फेंके गए होंगे, या एलिवेटर में हम फंस गए होंगे एंड एलिवेटर ने फंक्शन नहीं किया होगा. तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड पे सीड चला जाता है फियर का. तब अब ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं. आई हैड एन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अबाउट 10 years of age. I accidentally fell into a pool and went down
3 times. I can still remember the dark water engulfing my head and my gasping for air until another boy pulled me out at the last moment. This experience sank into my subconscious mind, and for years I feared the water. तो यहाँ पे ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो 10 साल के थे, बाई चांस कैसे एक्सीडेंटली वो पूल में गिर गए थे एंड पूरा पानी के नीचे वो 3 बार चले गए थे एंड ही कैन स्टिल रिमेम्बर कि कैसे वो हवा के लिए, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे टिल द लास्ट मोमेंट जब उनको एक लड़के ने बचाया। तो तब से लेके सालों तक वो पानी से डरते रहे। फिर एक एल्डरली साइकोलॉजिस्ट ने उनको हेल्प की। कैसे की? An elderly psychologist said to me, "Go down to the swimming pool, look at the water, and say out loud in strong tones, I'm going to master you. I can dominate you." Then, sister, थोड़ा सा नीचे कीजिए। Then, go into the water, take lessons, and overcome it. This I did, and I mastered the water. Do not permit water to master you. Remember, you are the master of the water. When I assumed a new attitude of mind, the omnipotent power of subconscious responded, giving me strength, faith, and confidence, and enabling me to overcome my fear. ये ऑथर का खुद का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। जब वो सालों तक पानी से डरने लग गए थे तो एक साइकोलॉजिस्ट ने उनकी मदद की। एक प्रेयर उन्होंने बोला पानी के अंदर जाके, दैट आई विल मास्टर यू। तो ऐसे करके उन्होंने लिखा है कि सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया एंड फिर इन रिटर्न he was able to overcome fear. Now we will read master technique for overcoming any particular fear. The following is a process and technique for overcoming fear which I teach from the platform. It works like a charm. Try it. Suppose you are afraid of the water, a mountain, an interview, an audition, or you fear closed places. If you are afraid of swimming, begin now to sit still for 5 or 10 minutes, 3 or 4 times a day, and imagine you are swimming. Actually, you are swimming in your mind. It is a subjective experience. Mentally, you have projected yourself into the water. You feel the chill of water and the movement of your arms and legs. It is all real, vivid, and a joyous activity of the mind. It is not idle daydreaming, for you know that you are experiencing in your imagination will be developed in your subconscious. तो जो हम इमेजिन करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेशन डेवलप होगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये कोई डे ड्रीमिंग है, लेकिन ऑथर हमें ये समझा रहे हैं कि हमें 3 से 4 बार दिन में 5 से 10 मिनट तक सिट बैठ के थोड़ा अपने आप को स्टिल करके ऐसे इमेजिन करना है। कोई भी चीज जिस चीज का हमें फियर ओवरकम करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने स्विमिंग का दिया। तो ऑथर क्या समझा रहे हैं? इन योर इमेजिनेशन विल बी डेवलप्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, देन यू विल बी compelled to express the image and likeness of the picture you impressed on your deeper mind. This is the law of the subconscious. You can apply the same technique if you are afraid of mountains or high places. Imagine you are climbing the mountain. Feel the reality of it all. Enjoy the scenery, knowing that as you continue to do this mentally,
you will do it physically with ease and comfort. तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमें इंजॉय भी करना है। ऊपर भी उन्होंने लिखा था कि स्विमिंग करते हुए आप इंजॉय करो। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि सीनरी को बस एक इंजॉय करना है मेंटली, कि हम जैसे सच में कर रहे हैं। नाउ ही ब्लेस्ड द एलिवेटर। I knew an executive of a large corporation who was terrified to ride in an elevator. He would walk up 5 flights of stairs to his office every morning. He said that he began to bless the elevator every night and several times a day. He finally overcame his fear. This was how he blessed the elevator. यहाँ पे ऑथर एक पर्सन का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनको एलिवेटर से डर लगता था। तो फियर को ओवरकम करने के लिए वो रात को और सेवरल टाइम्स अ डे एक प्रेयर बोला करते थे, वो ब्लेस करते थे एलिवेटर को। कैसे किया उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, वो लिखा है ऑथर ने। द एलिवेटर इन आर बिल्डिंग इज अ वंडरफुल आइडिया. It came out of the universal mind. It is a boon, a blessing to all our employees. It gives wonderful service. It operates in divine order. I ride in it in peace and joy. I remain silent now while the currents of life, love, and understanding flow through the patterns of my thought. In my imagination, I am now in the elevator and I step out into my office. The elevator is full of our employees. I talk to them. कितने अच्छे से ऑथर ने एक ब्लेस करने का ये तरीका सोचा, नॉट ऑथर ने, उस पर्सन ने। अनिका सिस्टर थोड़ा सा नीचे करेंगे प्लीज। एंड दे आर फ्रेंडली, जॉयस एंड फ्री. It is wonderful experience of freedom, faith and confidence. I give thanks. मुझे ये पर्सनली ब्लेसिंग का आइडिया बहुत अच्छा लगा। बहुत वंडरफुली उन्होंने पूरा लिखा है कि कैसे उन्होंने एलिवेटर को ब्लेस किया, दैट इट इज अ वंडरफुल आइडिया, इट हैज बीन एन outcome of universal mind, and he is here, it is a boon for him as well as all the employees. It is a friendly, joyous experience. तो बहुत ही अच्छा था। He continued this prayer for 10 days, and on the 11th day he walked into the elevator with other members of the organization and felt completely free. Normal and abnormal fear. Man is born only with two fears, the fears of falling and the fear of noise. These are a sort of alarm system given you by nature as a means of self-preservation. Normal fear is good. You hear an automobile coming down the road and you step aside to survive. The momentary fear of being run over is overcome by your action. All other fears were given to you by parents, relatives, teachers, and all those who influenced your early years. Abnormal fear. Abnormal fear takes place when man lets his imagination run riot. I knew a woman who was invited to go on a trip around the world by plane. She began to cut out of the newspaper all reports of airplane catastrophes. She pictured herself going down in the ocean, being drowned, etc. This is abnormal fear. Had she persisted in this, she would undoubtedly have attracted what she feared most.
Another example of abnormal fear is that of a businessman in New York who was very prosperous and successful. He had his own private mental motion picture of which he was the director. He would run this mental movie of failure, bankruptcy, empty shelves, and no bank balance until he sank into a deep depression. ये कितना abnormal fear का एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑथर, लेकिन अगर हम रियलाइज करें तो हम भी ना अपने लाइफ में ऐसे कोई कोई मेंटल मूवी बना लेते हैं, लाइक 90% इन रियलिटी वो चीज होती ही नहीं है, लेकिन हम विदाउट एनी रीजन कुछ एक फियर को बिना मतलब भी बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो प्रॉस्पेरस था, सक्सेसफुल था, लेकिन उसका खुद का एक मेंटल मूवी चल रहा था अंदर ही अंदर, जिसके अनुसार वो फेलियर हो गया था, बैंकरप्सी देखा करता था एंड एम्प्टी शेल्फ्स को इमेजिन करता था। फिर उन्होंने he refused to stop this morbid imagery and kept reminding his wife that this can't last. This will be a recession. I will sure I feel sure we will go bankrupt, etc. वो फियर, वो इमेजिनेशन के कारण वो फिर अपनी वाइफ को ऐसे बोलते थे कि ये इमेजिनेशन सच नहीं हो सकता, नहीं तो हम ना सच में बैंकरप्ट हो जाएंगे। His wife told me that he finally did go into bankruptcy, and all the things he imagined and feared came to pass. The things he feared did not exist, but he brought them to pass by constantly fearing, believing, and expecting financial disaster. How important for us to learn this, क्योंकि हम भी ऐसे फियर कुछ कुछ बैठाते हैं, हमें उसको ना मन में सोचना होगा कि अगर हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे या फिर कहीं भी कोई भी एरिया में कुछ दुविधा है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा ना हो कि उसको अपने कांस्टेंट फियर से सच में ही बना लें अपने लाइफ में उसके एग्जिस्टेंस को। तो यहाँ पे उन्होंने भी फिर ऐसा ही पाया, वो डरते थे जबकि कोई ऐसी सिचुएशन थी नहीं, और उस डर के कारण सच में वो एक दिन बैंकरप्ट हो गए। हम्म सो Job said, the thing I feared has come upon me. There are people who are afraid that something terrible will happen to their children. ऐसे मम्मी पापा लोग चिंता करते हैं ना कि हमारे बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ऑथर ने वो चीज बताया है, and that some dread catastrophe will befall them. When they read about an epidemic or rare disease, they live in fear that they will catch it, and some imagine they have the disease already. All this is abnormal fear. This is very important for all of us. ऐसे अपने मम्मी पापा को भी टेंशन लेने की बहुत आदत होती है, एंड अगर कोई भी, हम जैसे कोरोना के टाइम पर सबको एक फियर हो गया था कि हमें कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो वही है, ऑल दिस इज abnormal fear. द आंसर टू abnormal fear, अब आंसर क्या है उसका? मूव मेंटली टू द ऑपोजिट. To stay at the extreme of fear is stagnation plus mental and physical deterioration. कितना सही लिखा है कि अगर जब हम extremely fearful हो जाते हैं ना, तो mental physical deterioration बहुत होता है। When fear arises, there immediately comes with it a desire for something opposite to the thing feared. Place your attention on the thing immediately desired. Get absorbed and engrossed in your desire, knowing that the subjective always overturns the objective. This attitude will give you confidence and lift your spirit. तो ऑथर क्या समझा रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज से डरते हैं, तो अंदर ही अंदर ना एक डिजायर भी पल रही होती है कि ये फियर नहीं हो के सिचुएशन एक्चुअली क्या होना चाहिए। लाइक कोरोना हर जगह था, तो कोरोना नहीं हो के विद मतलब डिजीज फ्री अ वर्ल्ड विदाउट कोरोना होना चाहिए, वैसा। तो ऑथर वही कह रहे कि अपनी डिजायर की तरफ ध्यान दे दो।
जो फियर है ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट कोई गुड डिजायर जो मन में आ रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस कर लो। तो ये जो डिजायर है वो हमें कॉन्फिडेंस देगा एंड लिफ्ट करेगा हमारे स्पिरिट को। द infinite power of your subconscious mind is moving on your behalf and it cannot fail. Therefore, peace and assurance are yours. Examine your fears. The president of a large organization told me that when he, Anika sister, thoda sa niche, हाँ. When he was a salesman, he used to walk around the block 5 or 6 times before he called on a customer. The sales manager came along one day and said to him, "Don't be afraid of the bogeyman behind the door. There is no bogeyman, it is a false belief." तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि अपने फियर को एग्जामाइन करो। यहाँ पे किसी कोई एक प्रेसिडेंट है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने बोला कि जब वो सेल्समैन था तो वो वॉक करता था अराउंड 5 to 6 टाइम्स बिफोर ही कॉल्ड अ कस्टमर। उनको कोई चीज का फियर हो गया था। तो सेल्स मैनेजर एक दिन उनके पास आए और बोले कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ बोगी मैन। मतलब बोगी मैन मीन्स कोई एक चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिर्फ मेंटल इमेजिनेशन है। तो इसलिए उनको कोई डर हो गया था जिसके बारे में सेल्स मैनेजर ने उनको समझाया दैट इट इज अ फॉल्स बिलीफ, देयर इज नो बोगीमैन। The manager told him that whenever he looked at his own fears, he stared them in the face and stood up to them, looking them straight in the eye. Then they faded and shrank into insignificance. तो ये हो गया फियर का सामना करेज के साथ। उन्होंने पूरा उस फियर को सामने सामने अपने देखा जब तक कि वो पूरा इनसिग्निफिकेंट ना हो जाए। करेज से देखा। He landed in the jungle. A chaplain told me of his experiences in the Second World War. He had to parachute from a damaged plane and land in the jungle. He said he was frightened, but he knew there were two kinds of fear, normal and abnormal, when we have previously point which we have previously pointed out. He decided to do something about the fear immediately and began to talk to himself saying, John, उन्होंने खुद से बात की जब उनको ये पता चला कि उनको डैमेज्ड पैराशूट से लैंड करना है जंगल में। तो उनको डर लगा, लेकिन फिर वो नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फियर के बारे में जानते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया, उन्होंने खुद से बोला, जॉन, you can't surrender to your fear. Your fear is a desire for safety and security and a way out. He began to claim infinite intelligence, which guides the planet in their courses, is now leading and guiding me out of this jungle. He kept saying this out loud to himself for 10 minutes or more. 10 मिनट तक उन्होंने ये चीज अपने आप से बोला। Then he added, something began to stir inside me. A mode of confidence began to seize me, and I began to walk. After a few days, I miraculously came out of the jungle and was picked up by a rescue plane. His changed mental attitude saved him. His confidence and trust in the subjective wisdom and power within him was the solution of his problem. He said, had I begun to bemoan my fate and indulge my fears, I would have succumbed to the monster fear and probably would have died of fear and starvation. Yes, it was really true. अगर वो जंगल में थे, अगर उन्होंने फियर को सरेंडर कर दिया होता तो वो स्टारवेशन एंड फियर से मर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करके कॉन्फिडेंस अराइज करके 10 दिन में ही फिर वो
जंगल से निकल गए थे. He was rescued. He dismissed himself. A general manager of an organization told me that for 3 years he feared he would lose his position. He was always imagining failure. The things he feared did not exist, save as a morbid, anxious thought in his own mind. His vivid imagination dramatized the loss of his job, until he became nervous and neurotic. Finally, he was asked to resign. देखिए ये abnormal fear के बारे में जानना कितना जरूरी था. शुरू में भी हमने पढ़ा कि बैंक्रप्सी की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, सिर्फ वो डर डर के कारण वो बैंक्रप्सी सच में अराइज हो गई. यहाँ पे भी उनको जॉब लॉस करने का फियर था. अब वो इतने फियर में थे कि फाइनली उनको रिजाइन करने के लिए बोला गया था. एक्चुअली ही डिसमिस्ड हिमसेल्फ. वो खुद अपने आप को डिसमिस करे हैं. हिज कॉन्स्टेंट नेगेटिव इमेजरी एंड फियर सजेशन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड caused the latter to respond and react accordingly. It caused him to make mistake and foolish decisions, which resulted in his failure as general manager. His dismissal would never have happened if he had immediately moved to the opposite in his mind. तो ऑथर हमें समझा रहे हैं कि ये सब सोच तो आती है. हम जैसे एनवायरनमेंट में है, वी आर पुल्ड मेनी टाइम्स टू थिंक नेगेटिव, टू बी फियरफुल. लेकिन हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली ऑपोजिट में चले जाना है. अगर हम उसी फियर में आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो वो फियर सच हो जाएगा. तो हमें इमीडिएटली ऑपोजिट में जाने का आदत बनाना है. दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम. During a recent world lecture tour, I had a 2-hour conversation with a prominent government official. He had a deep sense of inner peace and serenity. He said that all the abuse he receives politically from newspaper and the opposite. अनिका सिस्टर थोड़ा सा. हाँ जी. And the opposition party never disturb him. तो यहाँ पे एक जने का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, जिनको बहुत पॉलिटिकली अब्यूज ये सब मिलता था, बट वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे. हिज प्रैक्टिस इज टू सिट स्टिल for 15 minutes in the morning and realize that in the center of himself is a deep, still ocean of peace. Meditating in this way, he generates tremendous power which overcome all manner of difficulties and fears. Sometime previously, a colleague called him at midnight and told him a group of people were plotting against him. This is what he said to his colleague: I'm going to sleep now in perfect peace. You can discuss it with me at 10 a.m. tomorrow. हाउ वंडरफुल. अगर हमें कोई ऐसे कॉल करके बोले कि हमारे अगेंस्ट कोई प्लॉट कर रहा है, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा एंड इनका क्या रिस्पॉन्स है, जो 15 मिनट हर दिन मेडिटेशन करते हैं. एंड उन्होंने ना एक प्रैक्टिस बनाई थी कि वो देखा करते थे कि अब उनके डीप विद इन कोई ओशियन है पीस का, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था किसी भी बात से. और उन्होंने कलीग को ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ परफेक्ट पीस में, आप कल सुबह 10 बजे मुझसे डिस्कस करना. He said to me, I know that no negative thought can ever manifest except I emotionalize the thought and accept it mentally. I refuse to entertain their suggestion of fear. Therefore, no harm can come to me. उन्होंने उनको बताया ऑथर को कि उनको ये चीज पता है कि कोई भी नेगेटिव थॉट तब तक मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जब तक मैं इमोशनलाइज नहीं करूँ उस पर. तो ये हमें भी सीखना है कि हम इन्फ्लुएंस ना हो. नोटिस हाउ काम ही वॉज. एग्जैक्टली. हाउ कूल, हाउ पीसफुल. He did not start getting excited, tearing his hair, or wringing his hand.
At his center, he found the still water and inner peace, and there was a great calm. Deliver yourself from all your fears. सिस्टर ये हम कल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, ओके ओके। आज के लिए ऐसे भी बहुत अच्छा सा हमने कवर किया है अब नॉर्मल फियर के बारे में जानकर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा अब नॉर्मल फियर के बारे में जान के कैसा लगा? मुझे तो पर्सनली सच्ची में शॉकिंग था एंड थोड़ा सा एक बहुत अच्छी लर्निंग हो गई कि फियर को कॉन्स्टेंटली नहीं लेते रहना है, नहीं तो कैसे वो सच हो जाता है। एंड लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो कितना अच्छा था, क्योंकि ना अब हम लास्ट में एंड कर रहे हैं ना आज के सेशन को, तो वो एक बहुत गुड नोट पे भी एंड हुआ है। एग्जाम्पल कितना अच्छा था कि उनको कलीग से पता चला कि कोई प्लॉट कर रहा है उनके अगेंस्ट में, बट ही वाज सो स्टिल, सो काम, सो पीसफुल। इट इज वंडरफुल। अनिका सिस्टर, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, नहीं जैसे आपने कहा इट वाज रियली एन आई ओपनर। बाकी अनुराधा सिस्टर, तेजल सिस्टर, आप शेयर करिए। जी ओम शांति। ओम शांति। जी आज का जो मेरा टेक अवे है कि आप अगर फियर को जीत नहीं पाओगे तो आप वो जो थॉट्स है फियरफुल वाले वो आपके जीवन में होने लग जाएंगे। हम्म। तो हमारे यहाँ कोई ऑप्शन बचा ही नहीं एक्चुअली कि हमें ये कोई ऑप्शन नहीं है कि ऐसे थोड़ा बचा के रखो कोई फर्क पड़ता नहीं। इससे फर्क पड़ता है लेकिन वो ऐसे ही वो आ जाते हैं नाइटमेयर्स की ओर। लाइक इट विल गेट मैनिफेस्टेड इन टू योर लाइफ। दैट इज व्हाट द ऑथर इज टेलिंग। सो तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि हम लोग हमारे जितने भी फियर्स होते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के होते हैं कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली अनकॉन्शियस फियर्स है कि हमें पता इस जन्म में थोड़े बहुत पता है लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर होता है तब पता चलता है कि मेरे अंदर फियर था। तो इसके लिए वो जो पॉलिटिशियन है वो मेडिटेशन करता था। वो उसने अपने अंदर की एक इतनी मास्टरी लाइक अपने आप को पहचाना कि मैं लाइक आई एम। जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं तब तक आप फियर में लाइक गिव अप करते रहोगे। अभी कोई भी ट्रिगर आके आपको हिला सकता है ऐसे है। क्योंकि आजकल इतने सारे लोग इतने पुअर वाइब्रेशंस है कि जहां पर भी कुछ भी लाइक पैंडमिक हुआ था कि इतने सारे लोग मर गए वो फियर के कारण ही मरे हैं मेजोरिटी मोर देन कहीं मुझे ना हो जाए कहीं मुझे ना हो जाए कोरोना वायरस। तो उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लिया अपने जीवन में। उन्होंने वो आह्वान कर लिया उस परिस्थिति को। तो ये मृत्यु का भय होता है क्यों? मृत्यु के भय से ही सारे भय जन्म लेते हैं। तो फियर को मास्टरी करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। कुछ टाइम आपको साइलेंस में बैठना होगा। अपने बॉडी सेंसेशंस या ब्रेथ को चेक करना पड़ता है क्योंकि फियर हम पता चलता है जैसे ये फियर आता है हमारा ब्रेथ फास्ट होने लगता है। तभी हम कैच कर सकते हैं वरना पता ही नहीं पड़ता कि बॉडी में कब अटैक और ये हाईजैक कर लिया अब फियर ने ब्रेन को। और ये इतना फास्ट होता है सेकंड्स में हो जाता है कभी कभी। तो इसी फियर के कारण ही ज्यादातर मृत्यु होती है कि हमें होश में रहेंगे तब फियर अटैक करना कम होगा। और फिर ये सब मानसिक ये अनकॉन्शियस थॉट्स है जो भी हम टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं या कोई भी हॉरर्स ऐसे देखते हैं तो मन में बैठ जाता है। तो हम सोचते हैं कि वो तो तब देखा हुआ था बचपन में
ऐसे नहीं होता कि वो वहीं बैठा है, जैसे ही ट्रिगर आता है वो बाहर आ जाता है, कि हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लेकर बैठते हैं, तो वो बाहर तो आएंगे ही। तो इट इज वेरी सीरियस एक्चुअली दिस टॉपिक, कि हम अपने फियर्स को पहले पहचाने, तभी हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो सकेंगे। जी हाँ ओम जी सिस्टर शांति। भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सही से ही हम्म, बताया आपने, एंड इट वाज रियली नाइस लेसन टुडे। तेजल सिस्टर। यस, ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन था और सभी के टेक अवेज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये पूरा सेशन ही पूरा टेक अवेज का था, तो कोई एक टेक अवे तो ले नहीं सकते। पर अगर मैं पर्सनली एक टेक अवे लूँ तो आई गॉट अ पर्सनल टेक्निक ऑफ हाउ टू ओवरकम माय फियर। कि मुझे दो दो तीन फियर्स है, तो अभी वो मैनिफेस्टेशन से, विजुअलाइजेशन से, मेडिटेशन से, और मतलब उसका कैसे सामना करना है, ये मुझे आज टेक्निक मिल गई। तो डेफिनेटली आई विल इम्प्लीमेंट दिस एंड improve and face my fear. That would be my takeaway for today. Thank you. थैंक यू सो मच सिस्टर। मुझे ये चीज भी ऑथर की बहुत अच्छी लगी कि इमीडिएटली ऑपोजिट सोचने लग जाओ, Yes, एंड yes. उसके Actually, वो फिर भी वो, हाँ फिर वो ऑपोजिट के डेप्थ में चले जाओ। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेंटल मूवी हमें बनाना है, लेकिन वो फियर वाली नहीं, मेंटल मूवी को एंजॉय करना है, वो जीत वाली कि हम फियर से जीत लिए हैं। तो वो वैसा। हाँ जी सिस्टर, चलो। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे तेजल सिस्टर ने कहा, मैं भी इस पे वर्क कर रही हूँ, जो अपने अंदर फियर्स हैं उसको फेस करना। एंड अपने अंदर थोड़ा वो कॉन्फिडेंस लेके आना कि इवन इफ यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, सो यू डोंट नीड टू फेयर। तो एक वो पॉइंट, एंड देन आई नोटिस्ड ऑल्सो कि फिर इवन बाहर रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि ज्यादा फेयर अपने अंदर ही होता है। तो ये एक चीज है जो मैं अपने आप पे भी काम कर रही हूँ। और मुझे अनुराधा सिस्टर का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि सबसे मेन फेयर जो होता है वो फियर ऑफ डेथ। मतलब दैट इज हम्म। समथिंग दैट इज सबको कहीं ना कहीं इस ये सबसे बड़ा फेयर है। जैसे अनुराधा सिस्टर ने समझाया कोविड के टाइम, यू नो हम्म। so these are the things that we really need to start coming on terms with ki, it's okay, the truth of life is death at the end of the day. तो और पता है मुझे क्या स्ट्राइक किया जब अनुराधा सिस्टर ने डेथ के बारे में बताया ना, तो मुझे जस्ट सडनली स्ट्राइक किया कि कभी कभी ना सिर्फ जो मरते हैं, जो आत्मा निकलती है शरीर से, जो वो डेथ प्रोसेस होता है, वो तो एक अलग डर है। बट ऐसे भी ना हम हर एक सेकंड कुछ ना कुछ डेथ फेस करते हैं, लाइक कोई चीज हमारे मुताबिक नहीं होती है तो एक सर्टेन सा डेथ होता है। कोई एक पर्सन हमारे लाइफ से लीव करता है। लीव मतलब वो उसी बॉडी में है, लाइक हमने कोई जॉब छोड़ा तो अब हम वो फ्रेंड्स के साथ नहीं है। तो ये भी ना एक स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ डेथ होती है हमारी चीजों की, हमारे पसंद की। तो वो डेथ भी, उससे भी हम डरते हैं। हाँ उसको भी जी हमें फेस बिल्कुल।